गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि Realme Buds Air 3 have been launched in India. So I will just give you a quick overview. I have been using this from last past 2 days. तो मैं बताऊंगा इसमें क्या चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्या है प्रोज एंड कॉन्स. I'll talk about a few details, not all. I cannot tell you each and every detail. Like I do not used to use them for gaming, so sorry guys, I wouldn't be able to tell about that. But I will cover pros and cons. Is it even worth to upgrade if you already have Realme Buds Air 2? And I'll talk about sound quality, build quality, battery life, fitting, and all. So, starting from the build quality, it is good. It is really good. It is better than Realme Buds Air 2. I can say that, surely say that. ठीक है, अच्छा है. और if you talk about the earbud itself, they are small, they are compact, they are lightweight. और ये इनकी फिटिंग Realme Buds Air 2 से बेटर है, ये भी मैं कह सकता हूँ. सो यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड बाई यूजिंग दिस. फिट के मामले में बहुत अच्छा है, ये नहीं गिरेगा कान से. मेरे कान से नहीं गिरा, मैंने 2-3 लोगों के और ट्राई किया, उनके नहीं गिरा. बट आई वुड से कि इट इज़ डिसेंट इनफ. ठीक है. दूसरा बात करते हैं अपन सीधा साउंड क्वालिटी पे. साउंड क्वालिटी इनका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है. दे आर लाउडर देन Realme Buds Air 2. और मतलब आपको मज़ा आने वाला है. यू विल एन्जॉय दिस. I have used, like you can say, I have used Galaxy Buds Live Pro. I have Deizo GoPods. I also have Realme Buds Air 2, which is not right now, but I've used them. Right, ठीक है. तो इसका साउंड काफ़ी अच्छा है. साउंड क्वालिटी अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रीमियम यूज़ नहीं किया है तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलेगा, बट इट इज़ रियली गुड. साउंड के मामले में आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. फिट, डिज़ाइन, साउंड क्वालिटी हो गया. लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी लाइफ. Battery life is also important, right? So I used to calculate each and every time. I used to calculate how much it drains and all. So after I got this, I fully charged both the buds case, fully charged it. Then when I use it, buds को almost 60% वॉल्यूम पे विदाउट ANC ड्रेन होने में टाइम लगा ऑलमोस्ट अराउंड 6 hours. 6 से 6.5 hours, which is really good. Like Buds Air 2 used to last around 4.5 hours. बट विदाउट ANC इन्होंने जो है 6 and 6.5 hours का ड्यूरेशन दिया है, विच इज़ रियली गुड आई थिंक. ऑल्सो एक चीज़ और है कि if you drain these completely and if you charge from this case, the case battery drops around 25 to 30%. So you can only charge it for around 3 times. So after charging full case and the buds, you will get almost around 24 hours, not more than that. If company is claiming like you will get 30 rounds, and I don't know how they calculated 50% volume and all shit. But honestly, practically you will get around 25 hours, which is decent enough. Realme Buds Air 2 used to give similar battery life around 23-24 hours. I used to calculate that as well. So sound quality, fit, and everything like हाँ ठीक है. So something which I do not like about this is, you can call it a nitpicking, and I've also seen few people complaining the same. Like the hinge quality is good, but sometimes you can feel there is slight movement from the sides when you push it from one side. There is lateral movement on the buds, which I do not think is a main big issue, but I would have to say कि हाँ ठीक है, बताना ज़रूरी है सबको. ठीक है. और अगर आपके पास में Realme Buds Air 2 या Deizo GoPods है तो इज़ इट वर्थ टू इम्प्रूव. देखो भाई, आपको सीधा सीधा बोलूँगा, अगर आपको 2 फीचर्स चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी. इट वर्क्स वेरी वेल. एक्चुअली बहुत अच्छा है. मैंने 2 फ़ोन में साथ में कनेक्ट कर रखा है, बहुत अच्छा है. तो अगर आपको वो चीज़ का नीड नहीं है और आपको स्लाइटली स्मॉलर स्टेम और लार्जर स्टेम से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप अपग्रेड मत करो. इफ़ यू हैव Realme Buds Air 2 and Deizo GoPods, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं है, आप कोई ज़्यादा मिस नहीं करने वाले हो इस चीज़ में. बट इफ़ यू वांट कि आपके साथ में ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी हो और शॉर्टर स्टेम साइज हो, तो यू शुड बाय फ्रॉम वेर एवर यू गेट द बेटर डील, राइट? So this is what I was going to say. Anything if I missed? Yeah, the ANC quality I forgot. ANC is superb. मतलब दो कंपनी का कहना होता है 42 डेसिबल. आई डू नॉट बिलीव इन दोज नंबर्स. आई एक्चुअली एक्सपीरियंस दिस. इट इज़ as good as Samsung Galaxy Earbuds 2. Sorry, Samsung Galaxy Buds Pro, sorry. So सच में ANC was really good. I was very surprised. मुझे इतना उम्मीद नहीं था ANC का. Usually I do not use ANC, but when I use them, these were like really very good in terms of ANC. So this was it. It is really good product. I was waiting for them since so long.
and slight few things I have mentioned it. If you have any doubt, please let me know in the comment. I'm sorry about the setup. I'm not any tech review guy or something. So it's just something I wanted to share. So I just shot it in a single video. I do not have any script written over here. So I would love to help you out. If you have any doubt, please let me know in the comments. If you like any of this thing, if you like any of my experience, please make sure to subscribe. Thank you so much, guys. Have a nice day. Okay, there is something weird about the call quality I forgot to mention. Yeah, the call quality is okay. It is not as good as Realme Buds Air 2, I would say. It is almost equivalent to that. But there is something weird thing I have seen in that. Like if you use both the buds at the same time while on the call, there is some deterioration in the call quality. But if you use one earbuds at a time, it is better. I don't know why, बट जब आप एक यूज़ करोगे, एक बड्स को यूज़ करोगे कॉल के लिए, तो आपको बेटर साउंड क्वालिटी मिलेगी रैदर दैन आप दोनों ईयरबड्स को एक साथ यूज़ करते हो. सो दिस इज़ समथिंग विच आई हैव ऑब्जर्व्ड. आई वांटेड टू शेयर दैट्स ऑल.